Welcome to Bridgenile Capitals. So, from today onwards, we will be starting a series on trading for beginners. Basically, means from basics to the end, we will be going on through this series. I just request every single person to join the entire series and observe the entire video that we will be showing to them. Right? Okay. Any beginner who just want to learn trading, they can learn from it. So, before moving on to trading, we have to start from a very basic concept of trading, that is something called the difference. You have to understand the difference between investing and trading. Moreover, what is the basic difference between investing and trading? Whenever a question comes in, there will be a question something around that will be differentiating between investing and trading. Now, investing कितने प्रकार का होता है और trading कितने प्रकार का होता है, मतलब बेसिक डिफरेंस क्या होता है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में, एंड हाउ आर द डिफाइंड बेसिकली, राइट? इन्वेस्टिंग, what you have to understand is investing is one category, something called the growth investing and value investing. ग्रोथ इन्वेस्टिंग किसको बोला जाता है? सपोज कोई कंपनी बैंकक्रप्ट के किनार पे है, मतलब वो डूबने वाला है और उसका शेयर प्राइस 30 रुपीज़ चल रहा है. किसी कारणवश वो कंपनी अच्छा कर लेता है एंड इट बाउंस बैक्स एंड इट्स शेयर प्राइस रीचेज एट 110 रुपीज़, राइट? सो जिसने जिसने यहाँ पर 30 रुपीज़ में ग्रोथ 30 रुपीज़ में फाउंड आउट किया कंपनी को, सो उसका ग्रोथ हो गया 110 और या फिर 200 300 कुछ भी. देयर मल्टीपल कंपनीज, राइट, प्रोजेक्टिंग लाइक दैट. That's growth investing, that's growth value, that's growth investing. Next comes value investing. Value investing matlab, if you want to understand actually value investing, I would like to say, let me show you this chart, right? The actual meaning of value investing. The value investing according to Warren Buffett comes from this particular line. क्या लाइन देखते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग मीन्स यहाँ पर मार्केट में चल रहा है प्राइस, ठीक है? अब मार्केट में जब प्राइस चल रहा है, वो प्राइस नीचे आएगा, सपोज इतना नीचे आ गया कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ प्राइस, ठीक है? मार्केट में कुछ भी सामान हम खरीदने जाते हैं, उसका एक प्राइस दुकानदार बोलता है, हम लोग एक प्राइस लगाते हैं जो हमको ठीक लगता है. जो इन्वेस्टर को ठीक लगता है उससे नीचे वाला प्राइस को बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है, ठीक है? तो जब तक वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे नहीं आएगा, इन्वेस्टर शुड नॉट परचेज एनी पर्टिकुलर स्टॉक. दैट इज़ द रूल. जब यहाँ पर आता है, देखो प्राइस, इफ इट रेंजेस एट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, व्हाट हैपेंस? बाय व्हेन मार्केट ऑफर्स द बिजनेस एट अ डिस्काउंट टू फेयर वैल्यू, मतलब उसका जो वैल्यू है उससे नीचे आ रहा है, दैट इज द टाइम टू इन्वेस्ट और बाय एनी पर्टिकुलर शेयर, राइट? नेक्स्ट, अब और सेल कब करना है? व्हेन टू सेल, व्हेन टू सेल द पर्टिकुलर बिजनेस? व्हेन इट्स ओवर वैल्यूड, मतलब जितना खरीदा था उससे बहुत ऊंचा बिक रहा है. अब ऊंचा बिक रहा है मतलब जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा बिक रहा है. When those correlations are not matching, that is the time to sell the share. This is the meaning of value investing. Value investing means buying an undervalued share, selling an overvalued share. Simple. Am I clear with it? Okay. Next, we will be coming to one of the formulas of Warren Buffett. If you see out here, he speaks something about, he has told this particular theory on many of his interviews, if you have seen in YouTube. He says that value investing is not related to P, PV or high dividend yield. This is completely unrelatable. You cannot judge value investing by P ratio or any particular metric that will say this company has an intrinsic value of this particular thing. ये कभी कोई मैट्रिक से बोला नहीं जा सकता. None of the CA or none of any economics can determine that this is the perfect time to buy a stock or this is the exact valuation of a stock. This is impossible to say, correct? This is what Warren Buffett says. The value investing is something about an investor should proceed with. वो इन्वेस्टर को लगना चाहिए कि हाँ भाई ये वैल्यू ठीक है, इससे सस्ता मिला भाव तो मैं खरीदूंगा, इससे बहुत ज़्यादा चढ़ गया तो मैं बेच देने वाला हूँ, बस. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस an investor should keep in mind. Clear? Now, this is the two kinds of investing. Investing we understood there are two kinds of investing, growth and value. Growth मतलब सस्ता में खरीदा, महंगा में बेच दिया. वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब अंडर वैल्यू स्टॉक खरीदा, ओवर वैल्यू स्टॉक हो गया तो बेच दिया. नेक्स्ट वी हैव द कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिंग एज वेल. अब ट्रेडिंग का कैटेगरीज कितना प्रकार का ट्रेडिंग होता है, लेट्स सी. देयर बेसिकली 4 कैटेगरी ऑफ ट्रेडिंग, राइट? नंबर 1, द कैटेगरी ऑफ ट्रेडिंग इज कॉल्ड स्कैल्पर. अब स्कैल्पर मतलब स्कैल्प ट्रेडर्स बोला जाता है, मतलब होल्डिंग ट्रेड्स, दे होल्ड ट्रेड्स फॉर यू कैन सी सेकेंड्स और मिनट्स, मतलब कुछ सेकेंड के लिए या फिर कुछ मिनट के लिए होल्ड करते हैं वो लोग ट्रेड्स को. दोज आर बेसिकली नोन एज स्कैल्पर्स. मतलब एक ही कैंडल में इन, एक ही कैंडल में आउट, वो लेवल का होता है स्कैल्पर्स. वी शुड अंडरस्टैंड हाउ टू डू स्कैल्पर्स एंड ऑल.
Every field in trading is profitable, but you need to have practice and patience. We'll be discussing everything. Okay. Now, next category of traders we have something called day traders. डे ट्रेडर्स मतलब एक ही दिन में खरीदा एक ही दिन में बेचा, उसको इंट्राडे भी बोला जाता है. वी कॉल इट इंट्राडे, राइट, इंट्राडे ट्रेडिंग. दिस आर ऑल्सो कॉल्ड डे ट्रेडर्स, मतलब होल्डिंग ट्रेड्स फॉर अप टू फुल डे. मतलब एक ही दिन में खरीदा, सपोज एक दिन में 5 रुपये शेयर का भाव चल रहा है, 6 रुपये गया मैक्स उतना में ही. अब 1 रुपये मुनाफा हो गया शेयर में, सपोज मैंने 100 शेयर लिया तो 1 into 100 रुपीज़ इज माई प्रॉफिट. सिंपल, दैट्स डे ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग, होल्डिंग ट्रेड्स फॉर मल्टीपल डेज और वीक्स. स्विंग मतलब पर्टिकुलर टारगेट में होता है. दिस ट्रेडिंग फॉलोज अ ट्रेंड के ऊपर बेस करके फॉलो किया जाता है. विल बी लर्निंग एवरी सिंगल पोजीशन ऑफ दिस टेक्निक, राइट. नेक्स्ट समथिंग कॉल्ड पोजीशन ट्रेडिंग. Position trading basically means holding trades for several weeks, months, years. This is something we call it growth investing. And now you can say that, अरे ये क्या बात कर रहे हो, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक हुआ क्या? See, in investing also we buy and then we sell. Anything we buy and sell or buy is called a trade. कोई भी व्यापारी खरीद रहा है बाहर से लेके और यहाँ पर आके बेच रहा है तो उसको ट्रेड बोला जाता है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ट्रेडर्स. अब ट्रेडर मार्केट में नहीं होता है, जो लोग जो कुछ भी खाता वगैरह बेचता है या फिर कुछ भी एनी पर्टिकुलर एक्सेसरीज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिंग. एंड दिस ट्रेडिंग कम्स इन मार्केट एज वेल. ट्रेडिंग मतलब वेन एवर यू बाय एंड यू सेल. इन्वेस्टर मतलब क्या होता है कि बेसिकली वेन दे बाय इन टू योर स्टॉक एंड दे होल्ड इट फॉर द लॉन्गर होराइजन, दोज आर कॉल्ड बेसिकली इन्वेस्टर्स. एंड दे विल सेल, मीन्स एवरी इन्वेस्टर एट द एंड इज अ ट्रेडर. Right, just like Warren Buffett, who is holding the share for Coca-Cola for last 70 years, and he hasn't sold it yet, so he is still investing in it. He has been invested in Coca-Cola. Correct? That's the difference. Okay. Now we'll be coming to the next topic, something called market timings in India, especially because we'll be trading in Indian markets, Indian indexes, Indian equities. Right? We have three timings out here: 8:45 to 8:59, or 9 to 11:30. And 11:30 to 11:55 basically. This is not 11:30, this is basically 3:30, and this is 3:30 to 3:55, right? Post market session, you should understand this thing. Okay, now 8:45 AM से मार्केट खुलना शुरू हो जाता है. मतलब दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ FII, DIIs एंड जो AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के रखता है, दे एंटर आउट है. नॉर्मल मार्केट सेशन मतलब सुबह 9 बजे से चालू हो गया 3 बजे तक. मतलब बेसिकली ये शुरू ही होता है 9:15 से. 9 बजे से यू कैन नॉट टेक ट्रेड्स. 9:15 एंड ऑल यू विल बी स्टार्टिंग. अब 9:15 से कौन ले सकता है? 9 to 9:15 विल बी टेकन बाय HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. दिस पीपल टेक ट्रेड्स. मतलब इफ़ दे हैव एनी पोजीशन, कल का कोई पोजीशन है तो उसको स्क्वायर ऑफ वगैरह करना, स्टॉप लॉस वगैरह लगाना, they can hold it, right? Next, we can only trade from 9:15 to 3:30 PM in intraday or any particular field in a day. ठीक है, this is an intraday position होता है. अब मार्केट ख़त्म हो गया आफ्टर 3:30, यू कैन नॉट टेक एनी ट्रेड. उसके बाद 3:30 से लेके 3:55 तक देयर इज अ पोस्ट मार्केट सेशन. मतलब इफ़ यू हैव ऑब्जर्व, कोई भी स्टॉक सपोज 67 में बंद होता है, 367 इज एट 330, तो वो जब भी 355 होता है तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 66.78 ये कुछ एग्जैक्ट वैल्यूएशन में आता है. तो उसके बाद भी कुछ बेचाई खरीदाई होता है, क्योंकि एग्जैक्टली ऑल द ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कैरिड अवे इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, राइट. ये कौन सा वैल्यू? ये भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स बोला जाता है, AMO. दिस आर आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, एंड विद इन द मार्केट दिस इज द विद इन मार्केट ऑर्डर्स, राइट. समझ में आ रहा है? दिस इज द बेसिक थिंग यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इन मार्केट्स. दिस इज द मार्केट टाइमिंग्स इन इंडिया. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम ट्रेड तो करेंगे, समझ लिए कि खरीदना है कुछ बेचना है, बेचना है कुछ खरीदना है, पर क्या खरीदना है क्या बेचना है? सो टू आंसर दैट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से that the first thing that you want to buy or sell, trading is done in terms of shares, जिसको इक्विटी बोला जाता है. मतलब ITC का शेयर हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर हो गया, दूसरा कॉल शेयर्स, वहाँ पर खरीदा बेचाई होता है. इंडाइसिस में खरीदा बेचाई होता है बाय अप्लाइंग ऑप्शंस. इन इंडिया इट्स वेरी फेमस.
They play lot of gambling with it, something called बैंक निफ्टी निफ्टी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इंडाइसिस के ऊपर होता है. इंडाइसिस को तो खरीद बेचा नहीं जा सकता, पर उनके ऊपर ऑप्शंस लगा के एज अ डिराइवेटिव वी यूज देम. समथिंग कॉल्ड इंटरेस्ट रेट्स. इंटरेस्ट रेट्स कैन ऑल्सो बी ट्रेडेड, राइट. ETFs, इक्विटी ट्रेडेड फंड्स, ये भी ट्रेड हो सकता है. बॉन्ड्स, ये भी ट्रेड हो सकता है. कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ के अंडर में आता है क्रूड ऑयल्स, कमोडिटीज़ के अंडर में आता है नेचुरल गैस. दिस इज ऑल थिंग. गोल्ड आता है, सिल्वर आता है. दिस ऑल थिंग्स कैन बी ट्रेडेड. वी विल बी लर्निंग इन द एंटायर सेशन. ओके, नेक्स्ट कम्स फॉरेक्स. फॉरेक्स मतलब INR, USD, ये सब करेंसी जो भी होता है. इवन दिस थिंग्स आर ट्रेडेड. सो यू एज एन इन्वेस्टर हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन सा पोजीशन सबसे सही रहेगा ट्रेड करने के लिए. whether you are eligible to invest in stocks, whether you are eligible to invest in all other sectors of financial assets. Correct? Okay. Next, you might have a question: how to trade stocks? This is a basic fundamental formula that I am giving you. See, decide what type of trader you want to be. So first you have to decide that what type of trader you want to be, whether you are a momentum trader, whether you are swing trader, scalper, day trader. You have to choose the category you belong to, right? Not everyone is a good trader, day trader. Among all those four traders, you have to choose which one you are. Next, you have to research on brokerages which is suitable for your style of brokerage. आपका स्टाइल का जो भी ट्रेडिंग है उसके हिसाब से आपका ब्रोकरेज सूट होना पड़ेगा. मतलब जो चार्जेस है, दोस्त चार्जेस ऑल्सो हैज़ टू बी सूट. मतलब मेरा दोस्त एक ब्रोकरेज लिया है, उसके साथ मैं लूँगा, दैट्स फॉल्स, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू हैव टू नो योर ओन स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग. सबका स्टाइल डे ट्रेडिंग में नहीं हो सकता, सबका स्टाइल मोमेंटम में नहीं हो सकता, राइट. एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल. यू शुड नो योर ओन स्टाइल. अब वो कैसे मालूम चलेगा? इफ़ यू जस्ट गो थ्रू दिस सीरीज यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट गोज. एंड आई बेट वन थिंग, after you go through this series, I guarantee that after every 10 trades you take, your 7 trades will be profitable. I guarantee. But for that, you have to stay in the entire video, right? You can't skip a video. If you ask me any question, I'll be more than happy. So open a brokerage account and fund it. But before funding it, I would like to move on to paper trading. Research the stocks you want to own, or you want to buy, you want to trade. Okay, place your own brokerage to buy your stocks. Yes, never listen to anyone, never listen to your friends, never listen to me, never listen to anyone. Just do your own analysis. If your own analysis goes wrong and you make a loss, it's okay. Okay, now next thing is we will be learning about risk management. These are the certain factors I'm telling you. We'll be going in all deep details among this. ठीक है, एक एक टॉपिक के ऊपर डीप में बात करेंगे. But basically first we will be going through them. Clear? Okay. Next, let's see the time required to learn trading. What is the time required to learn trading? Let's see. Time you need to give minimum of 3 to 5 years. अब ट्रेडिंग कोई हलवा थोड़ी है कि ऐसे ऐसे कर लिया, कोई भी आके कर लिया, कोई भी आके जीत गया. हाँ, कि आज कर लिया बस, घर में कुछ पैसे का समस्या हो रहा है, कल कर लिया बस अंबानी बन गया. वैसा नहीं होता है. That's not how trading is done. Trading is done in the longer horizon. It's just like a course. If you move on to do any particular degree of BTech or MBBS, हो जाएगा 2 दिन में ना? मैं तो बोलूँगा हो जाएगा. Impossible to do, right? Similarly, trading it's a huge field. I'll give you the entire field, right? Entire field of trading. Now see, in order to earn from trading, you have to learn it first. सब कोई ट्रेडिंग में आता है कि जल्दी जल्दी सीखना है. अब जल्दी जल्दी कुछ होता नहीं है. If you want to earn from trading, before that you have to understand, you have to learn what trading is. It's a business in long run. ये भी बिजनेस ही है, बट लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा. इफ़ यू वांट टू मूव इन अ गैम्बलिंग स्लॉट, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग स्लॉट. अगर आपको गैम्बलिंग करना है, मतलब इतना में खरीदा, इतना में बेच दिया, चला लक आजमा के देखते हैं कितना होगा, द ओनली रिजल्ट यू हैव इज लॉस or infinite loss. And I do not have to say that. You can see people, you can see your brother, sister, your neighbors, siblings, whosoever it is, they're making tons of losses because they don't know the system of trading, right? So this will be absolutely free for everyone. This videos and the series of videos I'm making, these are absolutely free for everyone. Anyone from any particular age, anyone can start trading, no matter whatever the age is. You can say, ना मैं तो बूढ़ा हो गया 80 साल का, अब मैं trading कैसे करूँ? No, you can earn. You can learn trading and you can earn. You might say कि ना मेरा एज तो अभी 5, आई एम जस्ट अ किड, I study in class 5, I just study in 6th class. You can still do trading.
If I'm aged something around 35 to 55, you can still learn trading. If you're age above 80, you can still learn trading, I would say. If you have the ability to learn, if you want to learn something, you can still do trading. इट्स परफेक्टली ऑल राइट. इन ऑर्डर टू ट्रेड आपको, आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्वालिफिकेशन कितना चाहिए. मैं बोलूँगा 5वीं पास चाहिए, 5th क्लास पास. मतलब प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आना चाहिए. इतना आ गया ट्रेडिंग में फर्स्ट क्लास, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं. बट the next thing is required. You have to be dedicated towards it. If you are dedicated, no matter whatever age you belong to, you will do it. You will be learning trading within next 3 to 5 years, right? अब उतना तो लगेगा ना. Okay, next something is habits that are necessary for trading. You need to understand what are the habits that is necessary for trading. कौन सा habit necessary होता है trading के लिए. First and foremost habit is the habit to read always. If you should have a habit to reading articles. You have to read a ton of articles. You have to read a ton of news if you are doing trading, because this will be based on this particular factor trading में. You have to depend upon the earnings report. मतलब Q1, Q2, Q3, Q4 earnings report के ऊपर depend करना पड़ेगा. Then you have to trade. Everything will be matter. Quarterly earnings जब भी हो रहा है, you should not take trades or whatever the factor is. We will be discussing through this entire series. These are the important things. Quarterly earnings में basically क्या होता है कि balance sheet. This is the balance sheet, right? Company का balance sheet. If you are trading in a particular stock of a company and its balance sheet shows negative or positive, then don't take trade. If it shows positive or negative, if there is any volatility in the stock, never take trade in that particular stock. So simple. So there are some habits that you have to develop in the field of trading. Trading works on one particular thing, simply called discipline. If you have discipline, trading will do good for you. And if you don't have discipline, trading will do very, very bad things for you. That's a guarantee from my side. So you should have control upon your side. Okay. Next, what I would like to show you is, see, once you just go through all of these particular processes, you will understand that trading is the game. Trading is the game where everything has been learned. Anyone can learn it. Anyone can do it, whatever they want. That's what trading is. From my next videos, we will be starting from, my next video will be based upon the price action, right? My next video will be based upon price action, theory and learnings. So if you don't want to miss any particular video, please go through in details. If you have any question, and one more thing I would like to say, that is, whenever you see my videos, please keep a pen and paper ready, or notebook, anything. What do you feel like important? Just note them down. Have any questions? Ask me personally. The mail is given to me. You can ask me personally, right? I'll be answering them. But you have to ask them. If you don't ask them, it's impossible. I want every particular person in India, especially, not to be unemployed. They should be employed. At least earn something. That's my only job. Okay. Thank you. We'll be watching out. Thank you. I'll be coming on the next video as well.